हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुधीर। मेरा नाम है टीएस सुधीर और आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 11वीं की इंग्लिश सिलेबस की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है चेरी ट्री और इसको लिखा है वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स एंड ऑथर्स रस्किन बॉन्ड ने। अगर आपने रस्किन बॉन्ड की कहानियां नहीं पढ़ी हैं अभी तक तो मेरा मशवरा ये रहेगा, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उनको जरूर पढ़िए। ही हैज रिटन सम ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल शॉर्ट स्टोरीज दैट यू कैन पॉसिबली रीड. So Ruskin Bond, I always suggest to my students that it should be compulsory reading for any teenager in India and abroad. Now, Ruskin Bond, he was born in Himachal Pradesh. Now he lives in Mussoorie in Uttarakhand. And this particular poem is about a tree. It's a very simple poem. काफी simple, सरल कविता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है that is extremely deep. So जो बॉक्स में दिया है रस्किन बॉन्ड के बारे में, उसके बारे में आप जरूर पढ़ें. इनफैक्ट रस्किन बॉन्ड also runs some kind of courses, online courses, writing workshops also to kind of encourage and train young budding writers. In case if any one of you is interested, I keep seeing those ads coming up on Facebook. So he has written many books, Sahitya Academy Award, Padma Shri in 1999. And this particular poem, इस पोएम का थीम क्या है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. ओके. रस्किन बॉन्ड इज एसेंशियली एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस. वे खुशी जता रहे हैं कि उन्होंने एक बीज बोया था 8 साल पहले. 8 years have passed. ओके. और 8 साल में उन्होंने उस पर्टिकुलर बीज की या पौधे की इतनी देखभाल नहीं की. उसके बावजूद द चेरी ट्री हैज मैनेज्ड टू एक्चुअली सर्वाइव एंड कम अप नाइसली टू बेयर फ्रूट्स. तो ये उस पेड़ की कहानी है, उस बीज, उस पौधे, उसकी पेड़ की कहानी है, एंड द रिलेशनशिप ऑफ द पोएट विद द चेरी ट्री. ओके. सो ये कहानी उस तरह से आपको देखनी पड़ेगी. नाउ the other thing that you need to understand is that यहां पर समय ने और बारिश ने, वर्षा ने उस बीज को एक तरह से it has allowed it to grow and develop and flower and blossom. Okay, so that is again something very important. So the poet is feeling very overjoyed. काफी खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि उन्होंने एक तरह से नेचर के साथ अपना एक एसोसिएशन बनाया है. ओके. नेचर के साथ एक एसोसिएशन बनाया है और एक तरह से यहां पर नैरेटर, द पोएट हिमसेल्फ इज अ क्रिएटर, क्योंकि बीज उन्होंने बोया था तो एक तरह से अब जो पेड़ हो गया है वे उसके मालिक हैं. और वही कहते हैं बिकॉज ही वांट्स टू ओन ए ट्री. दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा. तो मैसेज, इसके बारे में जो भी मैसेज है पोएम का वो एंड में पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मैसेज है इस पर्टिकुलर कविता का. पहला स्टैंजा देखते हैं. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. 8 साल बीत गए हैं, जबकि अब ये कविता कब लिखी है? 8 साल बाद. तो पहले 8 साल से शुरू करते हैं. 8 साल पहले मैंने उस चेरी सीड को घास के बीच में उसको वहां पर जमीन के अंदर गाड़ा. चेरी का मतलब समझते हैं? मैं चेरी का फोटो डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चेरीज दिखने में कैसे होते हैं. लाल लाल रंग के होते हैं. मस्ट हैव ए ट्री ऑफ माई ओन, ताकि वो बीज जो जर्मिनेट कर सके. आपने बायोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा. ताकि वो बीज जर्मिनेट कर सके. और क्यों उन्होंने बीज बोया? बिकॉज, और ये प्रश्न के रूप में आ सकता है आपसे, The poet wanted to have a tree of his own. वे एक ट्री के मालिक बनना चाहते थे. That he could claim a tree of his own. He wanted to own a tree and watered it once and went to bed. एक बारी वो बीज बोया, पानी डाला और चले गए. Okay, so that's all he did. He did not do anything else and forgot. Again, very important. बीज बोया, एक बारी पानी दिया, बिस्तर पर चले गए, भूल गए. ओके. बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग. लेकिन चेरीज को सर्वाइवल टेक्निक मालूम है. दो नो वन इज केयरिंग वेरी मच और नोइंग. इवन इफ कोई उसकी देखभाल नहीं करता है या उसके बारे में नहीं जानता है, उसके बावजूद चेरीज को सर्वाइव करना मालूम है.
चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इस पर पूरी तरह से लागू होती है. Cherries have a way of surviving even if no one is caring about them. Okay, so that is something very important. And suddenly that summer, near the end of May, बीज बोने के बाद गर्मी का सीजन आया, और नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड ए ट्री हैड कम टू स्टे. तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा पेड़ उग के आ गया था. उन्होंने तो देखभाल ही नहीं की थी, एंड येट फॉरगॉटन. फॉरगॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉरगेट मत कीजिए. ओके, इट वॉज वेरी स्मॉल, 5 months चाइल्ड. यानी कि उन्होंने बीज कब बोया होगा? जनवरी में, बिकॉज मई की बात हो रही है और 5 महीने की बात हो रही है. सो जनवरी 8 years ago he has sown the seed, forgotten about it, but 5 months later towards the end of May, when the summer is about to end, and summer का महीना का मतलब क्या है कि गर्मी काफी हुई होगी, बारिश नहीं हुई होगी, उसके बावजूद the cherry has managed to survive. Please write down all these points. क्वेश्चन आए आंसर में आप अपना डिटेलिंग के बारे में बताइए, ताकि आपको कितनी अच्छी तरह से डिटेल में कविता समझ में आएगी. ओके, I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child. Now this is an important line. He's personifying it. He's calling it a child. 5 साल का बच्चा है या 5 साल की बच्ची है. It was very small. So this particular line, he's using the poetic device of personification. Personification मतलब कोई human quality आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देते हैं. ओके, डिस्क्राइबिंग इट ए स्मॉल, द वे हम छोटे बच्चे को डिस्क्राइब करते हैं. लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. ग्रास इज रनिंग वाइल्ड बोलते हैं ना, आई मीन घास फूस हर जगह उग रही है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं रनिंग वाइल्ड. इसका मतलब ये नहीं कि घास भाग रही है. ओके, ये घास भाग वाला चक्कर नहीं है, लेकिन उसको इंग्लिश एक्सप्रेशन में रनिंग वाइल्ड बोलते हैं. द ग्रास इज रनिंग वाइल्ड ऑल ओवर द प्लेस, मतलब हर जगह घास उगी हुई है. उस घास के बीच में ये काफी छोटा सा एक पौधा है, 5 महीने का. तो यहां पर भी देखो रनिंग वाइल्ड एक तरह से पर्सोनिफिकेशन के रूप में दिया गया है, एज दो सम ह्यूमन बीइंग इज रनिंग वाइल्ड. ओके, ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्मॉल एंड टॉल. द प्लांट इज स्मॉल, द ग्रास इज वेरी टॉल. ओके, देन goats ate the leaves and the grass cutter scythe split it apart. Scythe को मैं यहाँ पे फोटो डाल देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए scythe दिखता कैसे है. एक शार्प ब्लेड रहता है और एक हैंडल रहता है जिससे कि गार्डनर्स घास को काटते हैं. ओके, ग्रास कटर साइथ. बकरियां आके लीव्स खा जाती हैं, उनको भी तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर चाहिए. ग्रास कटर आके घास काट देता है, और घास काटते वक्त वो उतना ध्यान नहीं देता है और इस पौधे के भी कुछ लीव्स या ब्रांचेस को कट कर देता है. ओके, स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट. ओके, ब्लाइट मतलब मॉनसून ऑल्सो, रेन ऑल्सो, हेवी रेन होगा तब भी पौधे को डैमेज होगा. इफ द पौधा इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज नॉट बिकम ए ट्री. श्रिवल्ड का मतलब सिकुड़ा हुआ, ड्राइड अप. ओके, द स्लेंडर स्टेम. द स्टेम में इतनी ताकत नहीं है, इट्स स्टिल पतला सा स्टेम है. इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच्ड 3 new shoots grow. ओके, सो द नेक्स्ट स्प्रिंग यानी कि अगले साल स्प्रिंग सीजन जब तक आया, उसने देखा, पोएट ने देखा कि 3 नए शूट्स, 3 नए ब्रांचेस और उगे हुए हैं. द यंग ट्री स्ट्रगल. ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस बात को ध्यान रखना. द ट्री इज ऑल्सो सर्वाइविंग, फाइटिंग टू सर्वाइव डिस्पाइट ऑल दिस एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? गोट, द पर्सन हु हैज प्लांटेड हैज नॉट बॉदर्ड टू लुक आफ्टर द प्लांट. Then the grass cutter, then the monsoon season, right? The summer, despite all these adverse elements, ये सारे जो elements हैं उसके खिलाफ हैं, उसके बावजूद the cherry tree has managed to survive and grow, and 3 new shoots came in the spring season. The young tree struggle upward thrust. Thrust मतलब ऊपर की तरफ, thrust करके बाहर निकलने के लिए. सो इट इज काइंड ऑफ, इट शोज अ सर्टेन फोर्स, इट शोज अ सर्टेन डिटर्मिनेशन. थ्रस्ट मतलब डिटर्मिनेशन, ओके, के रूप में भी उसको समझ सकते हैं. इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट. फियर्स का मतलब यहां पर
यहां पर उसको एक एग्रेसिव टोन में यूज किया गया है, यानी कि एग्रेसिवली इट इज ट्राइंग कि मैं सरवाइव करके रहूंगा या रहूंगी। ओके, अभी प्लांट्स को किस जेंडर में डिस्क्राइब करते हैं वी कांट से। सो द यंग चेरी इज स्ट्रगलिंग टू ग्रो अपवर्ड, its branches manage to grow fiercely in an aggressive tone upwards. Why? To get more light, to get more sun, to get more air, right? जितना बड़ा होगा उतनी ताकत भी होगी, स्टेम भी बड़ा होगा और उतनी ज्यादा लाइट, हवा और सनलाइट मिलेगी, right? Fierce because again it is a survival of the fittest. Okay, it's aggressive because unless it fights to survive it will die, है ना, बिकॉज इतने सारे एलिमेंट्स उसके खिलाफ हैं। ओके, द प्लांट वांट्स टू फाइट इट आउट फॉर इट्स ओन सर्वाइवल। यहां पर लस्ट मतलब ऑल्सो लस्ट इज यूज्ड एज एन एग्रेसिव lust for life, that it wants to survive and grow. Okay, so it's a lust for life. और यहां पर अगर आप देखें इट्स आर्म इन ए फ्रेश फियर्स लस्ट, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट एफ फ्रेश एफ फियर्स का इस्तेमाल किया गया है एक साथ। सो इट्स एन पोएटिक डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, जैसे मैंने कहा आपको, I could only wait as one who watched wandering. So now अभी वो ध्यान देते हैं, उसको देखते रहते हैं। Wandering while time and the rain made a miracle from green growing pain. Okay, so the poet waited and watched the tree grow while the time passed and it also rained, and that created a miracle. उससे एक तरह से जादू हो गया। Okay, it created magic because it helped, because बारिश से that tree, cherry tree, could survive and grow. Okay, even though it meant a lot of struggle. Green growing pain, pain का मतलब it had to struggle a lot, लेकिन उसके बावजूद it actually grew very well. So it was a miracle, right? Now the poet is talking about himself. I went away next year. मैं अगले साल चला गया. Spent a season in Kashmir. From Himachal, he must have gone to Kashmir or Uttarakhand, wherever he was. Okay, he went to Kashmir, which is a neighboring state, right? Came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. What a beautiful line. So what he's saying is that also आप एक नोट कीजिए, जो कई सारे डॉट्स डाले हैं पेन के बाद, it shows that the pain was real, also it was there for a long time. So ये डॉट्स का भी अपना सिग्निफिकेंस है। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक पोएम में स्लेंडर स्टेम के बाद डॉट्स डाले थे, लेकिन यहां पर पेन के बाद जो डॉट्स डाले हैं, इट शोज दैट द पेन वेंट ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ही वेंट टू कश्मीर, he came back. After that he came back, he was thinner and he was also poor, but on the other hand, और ये poor और rich का contrast किया है। he came back poor यानी कि मेरे ख्याल से in terms of money he came back poorer, but he saw the sight of the cherry tree at the door of his house. वो पूरी तरह से बड़ा हो गया था। ओके, उसका 5 महीने का बच्चा अभी बड़ा हो गया था। ओके, इट हैड ग्रोन टू 6 feet tall, 6 feet high, my own dark cherry. Okay, and the poet could not believe that it was the same tree that he had planted in which dark cherries had grown. So my own dark cherry, तो उसमें अभी dark cherry आ गया था। Okay, I could scarcely believe it a berry. उसमें जो fruits थे, they had come. So he obviously felt very happy that, you know, something which he had sown had actually grown up so well to height of 6 feet now. Ripened and jeweled in the sun. You know, तो sunlight की इसमें it was almost looking like a jewel. Jewel conveys the feeling of gold, right? So it was kind of glistening, right? And ripened. Hung from a branch, just one, you know. So he's describing the fruit that was hanging. It was like it shone like a piece of jewelry in the sun. And next year there were blossoms, small blossoms matlab flowers. The flowers came on the tree, which were pink in color. Fragile ka matlab very very soft, and they could actually tear apart. So it was very very, you know, थोड़े delicately you needed to handle, otherwise वो petals उसके फट सकते थे, right? And quick to fall even in the slightest movement of the breeze. थोड़ी सी भी हवा चले तो नीचे गिर सकते थे। So एक तरह से pink also conveys a sense of delicacy, right? It's a very delicate color, right?
Fragile conveys the same thing. Quick to fall also conveys the same thing. So there is a sense of tenderness, there is a sense of delicacy that he is conveying to the cherry tree, जो कि अभी तक it was strong and aggressive and all that in the previous on the previous page, right? But now he's saying that the flowers are so pink and fragile and quick to fall at the merest breath, that is the sleepiest breeze, that is थोड़ी सी भी slightest movement of breeze हो, and breeze has also been personified. You know, हवा भी एक तरह से आराम से slowly it kind of this thing, उस झोंके में भी, उस हवा के झोंके में भी वो फूल नीचे गिर सकता था. Okay, so the breeze has also been personified with the use of the word sleepiest. Okay, so यहां पर भी alliteration का इस्तेमाल किया गया है. ऊपर made a miracle, made a miracle, okay. Green growing pain, G. So दो alliteration के poetic devices एक ही line में use किए गए हैं. Okay, so that's what he's doing. Now let's come to the end. I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue blind sky, at the finches as they grew. Finches matlab birds. So the poet is lying on the grass, घास पे लेटा हुआ है. Okay, and he's looking through the leaves at the blue sky, leaves of the cherry tree, and through the leaves he's looking at the blue blind sky. He's calling the sky as blind, and maybe he's calling it blind because you cannot see any eyes if you consider the sky as a face. अगर हम ऊपर को देखें और पूरे sky को एक face के रूप में देखें, so you cannot really make out any eyes or all that. Maybe that's the reason he's calling it blind. I mean, that's my interpretation. Okay, so at the finches as they flew, finches matlab birds as they flew in the sky and flitted through the dappled green. They moved through the dark green vegetation, etc. While bees, vegetation of the tree, while bees in an ecstasy drank. Ecstasy means feeling of great happiness. Okay, dappled matlab dark green patches, ecstasy matlab extreme happiness of nectar, bees coming and drinking the nectar of the flowers. Okay, and the sun sank swiftly. So he's talking about sunset, and the stars came out in the sky. So sham ho gayi, sunset ho gaya, abhi raat ho gayi, the stars have come out, and he's looking at the sky, and moon moths and singing crickets and I. Yes, I. So he's saying that he could hear the moon moths and the singing crickets. Crickets के जो sound होते हैं ना, so moths and sound, crickets जो insects होते हैं जो रात को आवाज करते हैं, green kind of sound they make. So he's talking about the moth जो light के हिसाब से उड़ता रहता है, and crickets which make that sound. And I praised night and stars and trees. So he's praising the night and the stars and his cherry tree, the tree that the small cherry grown by me. So पहले line में क्या लिखा था? That he wanted to own a tree. So that sapna has come true. So he's once again reiterating grown by me. Halaki he had placed the seed and forgotten about it till it was 5 months old, and he suddenly saw कि थोड़ा आ गया है, and उसके बाद भी he went off for a season to Kashmir. Okay, the message of the poem. Now understand the message of the poem. What is Ruskin Bond trying to say in this particular poem? He's giving a message about the trees adapting nature, कि किसी भी हालात में वो उगेगा, वो फाइट करेगा, फियर्सली फाइट करेगा और उगेगा. और इससे हम सबको सीख क्या लेनी है? हम सबको कुछ उल्टा हो जाए इमीडिएटली मायूस हो गया, अरे मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं होता है. यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, not for anyone else's sake. The cherry tree grew for its own sake because it refused to die. It did not want to die. Okay, its determination to grow despite whatever circumstances. जिसने बीज डाला, एक बारी पानी दिया, भूल गया, फर्क नहीं पड़ता, मैं उगूंगा. ग्रास कटर आके वो साइट यूज करता है, फर्क नहीं पड़ता, मैं उगूंगा. बकरी आके मेरे लीव्स खाती है, फर्क नहीं पड़ता, मैं उगूंगा. बारिश नहीं होती, धूप आती है, फिर भी मैं उगूंगा. Okay, so it was determined to grow, and that's the big lesson message of this poem. So the poet wants to highlight that human beings also can overcome all the obstacles. जितने भी hurdles हो, उसको आप overcome कर सकते हैं
and become strong and tough like the cherry tree. So each one of you has to be a cherry tree. Has to be a cherry tree, ताकि उसमें जब fruits आए, you can enjoy the fruits also. Okay, you can feel proud with what you achieve. Understood? What are the different poetic devices? Opposite ideas and words which have been used together, like cherries have a way of growing, though no one is caring very much or knowing. Okay, the opposite idea of growing without caring. It was very small, 5 months old, lost in the tall grass. Small और tall को एक साथ contrast किया गया है. Personification के बारे में तो मैंने already बता दिया आपको. Climax करके एक और poetic device का इस्तेमाल किया गया है, where you arrange the words in ascending order of their importance. Pink, fragile, quick to fall. So it is in that sense. Pink है, fragile है, and quick to fall. It is in that order of whatever happens. तो इसको climax कहते हैं, इस poetic device को. The rhyme scheme of the poem is AABB. There is a lot of color imagery which has been used in the poem. Sky has been described as blue. Cherry has been described as dark. Blossoms as pink. Leaves as dappled green. So ये सब visual imagery has been used. Color imagery का इस्तेमाल किया गया है. So lastly, once again I repeat, it is symbolic of human life. The messaging of the poem. It highlights the hardships that one has to face and overcome in order to be successful in life and survive in life. Okay, live life to the fullest, and it sends out a clear message. क्या? Survival of the fittest. Okay, समझ में आ गया? Okay, I hope you have understood this poem nicely, and इसको अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा, अगर आपको समझ में आ गया, you will be able to handle any question and answer. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. टाटा, बाय बाय.